इसमें जो मॉडल हम पढ़ते हैं दैट इज रदरफोर्ड मॉडल एंड द बोर्स मॉडल. सो रदरफोर्ड मॉडल that was created by alpha particle scattering experiment, right? Alpha particle scattering experiment. राइट, रदरफोर्ड एंड टीम ने क्या किया, एक गोल्ड न्यूक्लियस पे अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग किया. ये गोल्ड न्यूक्लियस, ठीक है, एक थिन गोल्ड शीट ली और उस पर अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग की. और जब उन अल्फा पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया, देन ये जैसे अल्फा पार्टिकल्स हैं, सो देन इट इज फाउंड टू बी deviated, and that is what the angle of deviation. Some particle return back from their path, कुछ पार्टिकल वापस आ गए, एंड मोस्ट ऑफ द पार्टिकल स्ट्रेट निकल गए. ठीक है, जो जितना क्लोजर टू एक्सिस था वो उतना ज़्यादा डेविएट हो गया. राइट, ये अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर है. अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर का एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर. और जो अल्फा पार्टिकल वापस आ गए उनका न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस था उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. राइट, दैट्स कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द एनर्जी. एनर्जी से कैलकुलेट हो जाएगा कैसे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल एनर्जी. द पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2e, गोल्ड का JE अपॉन R0. दिस विल गिव यू R0. इससे हमारे पास R0 आ जाएगा. एंड हाउ मच इज R0? दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e JD अपॉन हाफ m alpha v alpha square. Right, this way you can find out the distance of closest approach. The impact parameter. इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, दिस B is perpendicular distance of velocity vector of alpha particle from axis of nucleus when particle is far away. When particle is far away. Right. इम्पैक्ट पैरामीटर जितना ज़्यादा होगा उतना डेविएशन कम होगा. जितना इम्पैक्ट पैरामीटर कम होता जाएगा उतना डेविएशन ज़्यादा होता जाएगा. When impact parameter is 0, the deviation is 180. Right? अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें between the number of particles deviated at angle theta, एक ग्राफ, ये एंगल है, ये number of particles deviated at this angle. So we get this type of graph. Right? Most of the particle pass straight
Most of the particle passes straight and only a few particles return back with the deviation of pi, yeah, 180 degree, right? So this led Rutherford to conclude that maximum part of atom is free, vacant. Yani maximum space in atom is vacant. On the basis of that, a model is decided. What is that? Nucleus, all positive, complete positive charge is in nucleus, and almost all mass is in nucleus, right? And electrons are orbiting around nucleus, right? So that was the Rutherford model. Now, limitations of Rutherford model. First, stability. Right? That is the first limitation, stability. What was that? Like, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, then because of this it has a centripetal acceleration towards the center of Earth. So electron is accelerated. एक accelerated charge electromagnetic wave radiate करता है. So it will radiate electromagnetic wave, and when it will radiate electromagnetic wave, then it must take a spiral path and finally collapse to the nucleus. So that stability was not explained, that why this is stable, right? So this stability is not explained, okay. Then second, spectrum. Experimentally, spectrum is line spectrum. Experimentally, spectrum is line spectrum. But according to Rutherford model, it is continuous. It is continuous according to Rutherford model. What is that? Because it can, an electron can take any radius. So it can have any time period or any frequency. So it can radiate spectrum of any frequency, yeah, any wavelength. So accordingly the spectrum must be continuous. But experimentally जब हमने देखा तो spectrum was line spectrum. So there was no explanation for that कि ऐसा क्यों हुआ. जितने भी Rutherford के limitations थी, that was overcome by the Bohr's model. Bohr's model. First, stable orbit. The concept of a stable orbit, like an electron do not radiate energy when it is in a stable orbit, right? And those stable orbit are defined as the orbit in which angular momentum of electron MVR is equal to NH upon 2 pi, right? V N लिख लो, R N लिख लो. So the orbit in which angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi are the stable orbit, and electron can revolve only in those orbit. And when electron is revolving in the stable orbit, it do not radiate energy, right?
The second, spectrum. These were the problems of the Rutherford model, the spectrum. When an electron jump from higher orbit to lower orbit, it radiates energy. It radiates energy. So only few transitions are possible. Only few transitions are possible. Higher orbit to lower orbit कुछ ही transition possible है. So accordingly spectrum कौन सा हो जाएगा? Line spectrum. Because only certain orbits are possible and accordingly certain transition are possible. So accordingly the spectrum will be line spectrum. So energy released is energy of the initial orbit minus energy of the final orbit. Energy of initial orbit and energy of final orbit. अगर हम देखेंगे रेडियस, राइट, जो आपको इसमें याद करना है वो एक तो प्रोपोर्शनलिटी याद करना है, रेडियस प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, राइट. But the Bohr's model is for hydrogen like atom. तो for the hydrogen like atom Z is equal to 1 होता है. But if Z is there, Z is not 1, then R is inversely proportional to Z. The velocity is inversely proportional to n. यानी देखो रेडियस तो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, यानी जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, राइट. द काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 by n स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है, राइट. द पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी and total energy is equal to minus kinetic energy, right. इसमें एनर्जी में सब पैरामीटर्स कांस्टेंट है, सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट है, राइट. अगर हम देखेंगे तो m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, h व्हाट इज वेरिएबल द z एंड n स्क्वायर. सो जब हम ये वैल्यूज कैलकुलेट करके रखते हैं तो E इज इक्वल टू आता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम. फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम E is equal to -13.6 upon n square electron volt. Energy in nth orbit is En is -13.6 upon n square. So n is equal to 1. It is -13.6. N is equal to 2. This is E1, right. n is equal to 2, तो कितना हो गया? 3.4. 3.4. n is equal to 3. 1.51, राइट. अगर हम ये वाला गैप देखेंगे तो दैट कम्स आउट एज दिस माइनस दिस इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये वाला गैप देखेंगे सो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ऐसे ही जैसे हम आगे आगे चलते जाएंगे, so this gap will keep on decreasing, means
the orbital energy are getting closer. तो अगर हम एक डायग्राम बनाएं, so this is first orbit minus 13.6, then the second orbit minus 3.4, then third orbit is closer to this, that is minus 1.51, and the fourth orbit will be more closer, and the fifth will be more closer, and sixth will be more closer, so that they will keep getting closer and closer. Right. जब एक इलेक्ट्रॉन इस यहां से जंप करेगा यहां पे, then it will release 10.2 electron volt energy. This energy is also called as ionization energy. Ionization energy means that much energy is required to move electron completely out of atom, to make free electron, right? Ionize हो जाएगा, नहीं? जितना हायर ऑर्बिट से जंप करता जाएगा उतना एनर्जी बढ़ता जाएगा. दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट. और जब ये यहाँ से यहाँ जंप करेगा, सो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट. सो These are called lines. इनको हम lines बोलते हैं. Now, energy released in a transition. Energy released in electron transition. E is equal to E final minus, E initial minus E final. E initial minus E final. So that is minus 13.6 upon N initial square minus 13.6 N minus minus plus हो जाएगा N final square. And this energy is converted into radiation given by hc by lambda is equal to minus 13.6 1 by n final square minus 1 by n initial square. Then 1 by lambda is equal to, we take r, sorry मैंने यहाँ गलती की, ये माइनस साइन नहीं आएगा. 1 by lambda is equal to r 1 by n final square minus 1 by n initial square. That n is what? Sorry. So ये हमारा हुआ 1 by lambda is equal to this, and here r is called Rydberg's constant. This r is called Rydberg constant. This r is Rydberg constant. Spectral series. First, Lyman series. N final is equal to 1, N initial 2 to infinity. N final is equal to 1, N initial is equal to 2 to infinity. Minimum wavelength, when
n final is equal to 1 and initial is equal to, sorry, ये maximum होगी, and initial is equal to infinity. So ये आएगा 1 by lambda is equal to r, बस. So lambda is equal to 1 by r. This is minimum wavelength and maximum wavelength. Maximum wavelength. When n final is equal to 1 and initial is equal to 2. So ये आएगा 1 by lambda is equal to r 1 by 1 minus 1 by 4. So 1 by lambda is equal to 3r by 4. So this is maximum wavelength of this series. This way you can find minimum and maximum wavelength of every series. Okay. The next series is Balmer series. That is n final is equal to 2 and initial 3 to infinity. Then next is next series fast chain. N final is equal to 3 and initial is equal to 4 to infinity. So this way you know further जो भी सीरीज आएंगी तो उस हिसाब से कर सकते हो. Limitations of Bohr's model. Limitations of Bohr's model. First, only for isolated hydrogen like atom. यानी इसकी जो वैलिडिटी है दैट इज फॉर आइसोलेटेड हाइड्रोजन लाइक एटम. आइसोलेटेड एटम मतलब अकेला एटम है, राइट. इसमें क्या कंसीडर्ड नहीं है बोर्स मॉडल में, दैट इंटरैक्शन ऑफ एटम विद अनदर एटम, राइट, एंड इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अदर इलेक्ट्रॉन्स. सो एक अकेला इलेक्ट्रॉन है और एक अकेला एटम है. So all those interactions are missing. तो जैसे ही वो interactions होंगे then the model will be different. ठीक है. Then electron will not have a circular path, right? That is first limitation. The second limitation, right? Why particular transition are preferred? Why particular transitions are preferred, right? Like just say suppose करो ये ऑर्बिट है K, ये ऑर्बिट है L, ये ऑर्बिट है M और एक ही ऑर्बिट ले लो N. An electron jump from this orbit to K. So it can jump in many ways. This is one way to jump, right? The another way to jump, this to this, right? The other way to jump is this, then this, then this. More way to jump is this and this. ठीक है. So how many spectral lines are there? 1,
2 3 4 5 एंड ये तो ये कॉपी हो गई 6। जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस होती है ना, नंबर ऑफ लाइंस, दोज आर n इंटू n माइनस 1/2। अगर फोर्थ ऑर्बिट से जंप कर रहा है तो n इज इक्वल टू 4, तो 4 इंटू 3 12/2, टोटल 6 लाइंस होती है, राइट। तो टोटल 6 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशन है, अकॉर्डिंगली 6 डिफरेंट वेवलेंथ, 6 डिफरेंट wavelength, right? So why a particular transition is preferred? What we find कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन को प्रेफर करता है, से वो इस ट्रांजिशन को प्रेफर कर रहा है। अगर वो इस ट्रांजिशन को प्रेफर करता है तो इंटेंसिटी ऑफ 2 and 4 are more, सेकेंड और 4 की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो हमें ये पता चलता है जिस वेवलेंथ की इंटेंसिटी ज़्यादा है, देन अकॉर्डिंगली वी कम टू नो कि ये वाला ट्रांजिशन प्रेफर्ड ट्रांजिशन है। तो वाई अ पर्टिकुलर ट्रांजिशन इज प्रेफर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, दैट इज नॉट एक्सप्लेन बाय द बोर्स मॉडल, राइट। बात समझ में आ गई ना, व्हाट आई मीन टू से।